शिक्षा शोध प्रसार सकल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम है वो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके लिए हमारे भारत सरकार से लेके हम सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है कि हम नए इंटरप्रेन्योर्स को तैयार करें। तो सर्वप्रथम मैं अपने निदेशक महोदय डॉक्टर दिलीप घोष सर से निवेदन करूंगा कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर पातुलकर सर, उनका स्वागत एक पुष्पगुच्छ और शॉल देके करें। मैं संगीता भट्टाचार्य से निवेदन करूंगा कि हमारे निदेशक महोदय को एक पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। Thank you, sir. I personally thank our director, sir, who is the steering force behind this program. क्योंकि उनकी ही ये सोच है कि वो चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र हैं कि ये प्रेसिडेंट बने हैं हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ सेक्ट्रीकल्चर के। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेने के लिए। Dr. Patulkar sir, I am very thankful. You kindly consented for being the chief guest of our function. Sir, first of all, without taking more time, I request those participants. Sir, we advertise this in the newspaper that you who are interested to become entrepreneur, they should apply. And among them, we screened the people and then we keep the confirmation. So I request जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो काइंडली अपने बारे में थोड़ा एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। सर प्लीज फर्स्ट। सर मैं विजुअल एडवोकेट एसोसिएट कंसल्टेंट थाने मुंबई से। मेरा नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे कंसर्न विद एग्रीकल्चर। मैं इंट्रोडक्शन इसलिए चाहता हूं कि सो दैट कि हम एक दूसरे को जाने, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स कुछ गोंदिया, अकोला, अमरावती, नागपुर हर जगह से आए हैं, तो हम एक दूसरे को जान लें। और आपका पर्पस क्या है, शॉर्ट में थोड़ा अपना नाम और किस पर्पस के लिए आप इधर हैं, फिर हम आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। मैं गुणवंत डॉक्टर विजुअल एडवोकेट एसोसिएट एंड कंसल्टेंट मुंबई थाने से MSc एग्री MBA और फॉरेन ट्रेड। ये ग्रुप हमने 3 साल पहले शुरू किया था, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंसर्न विद कमर्शियल प्रोजेक्ट, हॉर्टिकल्चर, ग्रीन हाउस होंगे, सोलर होंगे, एक्सपोर्ट होगा, इस कंसर्न में हम यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ जो आने का कंसर्न था कि मेरा छोटा सा ग्रुप है, बहुत बड़ा नहीं है, 2 साल पहले से काम कर रहा हूँ। हमारे पास एक बहुत अच्छा पोटेंशियल और एक स्कोप बनता है, पर्टिकुलरली सिट्रस फैमिली के जो भी फल्स आते हैं उसके लिए, नॉट विद फ्रूट्स बट लीव्स एंड सैपलिंग। उस कंसर्न में कुछ जब भी मौका मिलेगा तो मैं जी। This is Professor Dr. Kailash Kudu from Kato. I am a farmer having 500 lemon trees, sweet Mosumbi trees. I took these plants from your institution. You said that 500. And entrepreneurship development program is my core subject and subject of interest also. If the people of our associated together, I think that this program shall be very much fruitful. And thank to you from my side. Thank you. Next. Raja Ram Singh, MBA Logistics and Supply Chain Management,
इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें ये जो EDP है, इसमें ये कौन सा नए इनोवेशन आपके इंस्टीट्यूट में किए हैं और हम लोग ये कैसे उसमें fit हो सकते हैं? थैंक यू। My name is Ashish Gore, and I'm assistant professor in Department of Mathematics, Shivaji Science College. हमारे पास more than 500 एकड़ खेती है जिसमें संतरे के बगीचे हैं और सभी लोग ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। हमें साइंटिफिक नॉलेज से समझने के लिए आया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आई एम CA चैत्र सालंकर, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि अभी हम लोग आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसको समझ सकें और उसको एंटरप्रेन्योर्स तक के हम लोग भी उसमें से कुछ सीख सके और उसको वायबल वे में कैसे इम्प्लीमेंट कर सके वो जानने के लिए मैं आया। थैंक यू। मेरा नाम संदीप सावरकर है, मैं एक फार्मर हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। संतरे के बारे में क्या टेक्नोलॉजीज आपके पास से मिल सकती है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? थैंक यू। Good morning, everybody. I am Sanjay Totawar. I am retired as an engineer and now I am a farmer. You may call me Asian farmer. But I am interested in technology, use of technology in the farming, from plant processing, protection, and marketing. Thank you. Good morning, sir. I am Uday Ghie. Recently, I have been Uday Ghie. Recently, I have taken a voluntary retirement. I do have 18 acres of land recently purchased, and I have also a plot at MIDC Buttimuri industrial area. So I am thinking that if we can have a processing unit at Buttimuri, so for that purpose, I have come to gain some knowledge. Thank you. Thank you. Good morning, I am Devendra Mahajan. I am basically environmentalist, but now started full-time farming. I have lemon trees, around 3,500 trees in Varda district, border, Nagpur-Varda border. And as per my experience, the produce which we are selling is we are not getting enough rates for that produce for the lemon. All trees are from this institute only, 3 varieties, and hence I intend to do something into processing. Okay, thank you. I'm CS Swayam. I'm a farmer and trader. I want to know the latest innovative technology in preserving the oranges for export purpose. Thank you. Thank you. Thank you. नमस्कार, मनीष पाटील आणि मी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी मध्ये फूड प्रोसेसिंग मध्ये. Thank you. आय एम रुपेश गारवले टू लर्न पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नॉलॉजी इन Thank you. ऑरेंजेस. Thank you. Good morning, respected sir. My name is Pooja Gu. I am a research scholar, PhD research scholar of Dr. Ambedkar College, Nagpur. My main purpose is learning a new thing and new ideas for future use. Good. Good day, sir. My name is Kaushik Kumar Popat, Chief Manager, State Bank of India. To gain the knowledge, that is my purpose. Thank you. Thank you. Hello, sir. I am Chetan Wagmare. BE Electronics, worked in IT field for around 10 years. Right now, I am doing farming. Some land is in Umred and some land is in Vardhamna. There I have planted orange trees and I wanted to learn about processing technologies and wanted to do some business on that. Thank you. Good morning, everyone. Myself Ashish Athilkar. Basically, chemical engineer as a professional background, but recently moved to farming. Planted 500 citrus plants, Mossambi and oranges, and planning to Kagdi Limbu this year. So we took the first step of planting, and from engineering background, so we know कि 4 साल तो लगेंगे ये सारा सीखने में समझने में. So that's why I am here to learn from production to post harvest. Thank you. Quickly, Tora. Morning. Good morning, everyone. My name is Anirudh Sharma, and my purpose of visiting this program is that me and my friend here work for an NGO, which we have started recently, and we intend to gain knowledge from here and spread it
to the farmers who are in need. Okay. Okay. Morning, everyone. Good morning, everyone. I'm Naveen, and I'm MBA in International Business, and we both together work in an NGO called Sushila Foundation. The main purpose would be imparting all the knowledge which we gain today to the farmers. Thank you. Yeah, hello. My name is Vijay Kadu. I am an ex-employee of Bayer Crop Science, and now my purpose of attending this seminar is to understand the post-harvest technology which can be used along with my son-in-law Piyush Kale, so that we are also thinking something to do in this field. Thank you. Any more? कोई और भी है? Good morning, all of you. I am Janvi Satpute. I am a student of BTech Food Technology. Good morning, myself Ishita Bhasake. I am preparing for MBA. Thank you. मैं SM Dorle, retired officer from IBM, Indian Group Mines, now working for national level for CGHS. Yes. And, I'm from actually Bhandara. My agriculture field is there. I want to know what is the technology is going on. Thank you, sir. Okay, sir. Any more, sir? Hello, myself is Vijay Shivankar. Basically, I am a food technologist. Presently, I am in the manufacture of bakery additives and ingredients. Good. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मनीष नंदरधने. मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ. इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नया जानने के लिए मैं यहाँ पर. Okay, thanks to all. कोई और है? Why I ask this question? Because we are here to know that at what level people are interested to become an entrepreneur. Mostly the people are so literate. I'm highly thankful to you people, the engineers, management, food technologists. They are coming forward for this particular. Thank you. Now I request one more small request to Sangeeta Bhattacharya to welcome our Vice President of our Indian Society of Citriculture, Dr. Malani Sahab. He is Vice President to our society. Thank you, Malani Sahab, for visiting us and giving your valuable time to us. Actually, sir, in this program, we had requested the chartered accountants, then bank officials from the private as well as the public sector, that is State Bank to Axis Bank. We had requested the National Horticulture Board, Deputy Director Sharma ji is there, and NABARD, we had invited, sir. So we try to take the people at a common platform where the finance, then preparing the project, the detailed project reports, and the person who are entrepreneurs, they should not run here and there. They can discuss then and there that how they can frame a project and they can get the finance and who is the best. So that is our motto, sorry, for this organizing these programs. So now bank officials, koi hai? State Bank, Axis Bank se abhi? NABARD. Sangeeta Bhattacharya madam, I request you to kindly honor our कुछ दीजिए हमारे डॉक्टर शर्मा जी को, जो डायरेक्टर है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड. शर्मा जी. Thank you, sir. Kindly honor the CA, chartered accountant. They are our special invitees. So please come. Back se ko. Thank you. So, Kaushik Kumar Popat from State Bank of India. Okay. On SM Dorle from State Bank of India. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Please.
Chitta Salkar, you are the okay. Give a flower bouquet. Thank you, sir, for joining us. Thank you. Now I request our director, sir, Dr. Dilip Ghosh, Director CCRI and President of the Indian Society of Citriculture, because this program is in collaboration with Indian Society of Citriculture, to give his introductory remarks. नमस्कार, मंच पर उपस्थित आज का चीफ गेस्ट, मोस्ट रेस्पेक्टेड Dr. Ashish Patulkar ji, is an eminent scientist, an able administrator, and the Honorable Vice Chancellor of Maharashtra Animal and Fisheries Science University, Nagpur. He is also a good friend of mine. Sir, I welcome you all. I welcome you here in today's program. Patulkar ji, he is our chief guest. In fact, Dr. Sri Eknath Holeji, who is an IAS officer and Secretary Department of Agriculture, he is supposed to be here as guest of honor in today's program. मैंने थोड़ा टाइम पहले उनसे फोन आए हैं, because you know अभी महाराष्ट्र का असेंबली सेशन चल रहा है, तो he is extremely busy today. लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है, कोशिश करेंगे दिन में कोई किसी भी टाइम आधा घंटा के लिए टाइम देकर उन्होंने आएंगे. इस साल में मौजूद हमारा डॉक्टर मलानी साहब, who is the Vice President of Indian Society of Citriculture, other executive members of Indian Society of Citriculture, and most importantly all the participants जो लोग आज इंटरेस्ट लेके आज का वन डे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो NAIF स्कीम ICR के अंदर में हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस सभी को आज का प्रोग्राम में मैंने वेलकम करता हूं. जैसे कि आप जानते हैं जी, इंस्टीट्यूट 1985 में हमारा जर्नी शुरू हुआ था. आज से करीब 37 इयर्स पहले एक छोटा सा सेंटर, बल्कि इनिशियली इट वाज ए अंडर IIH बेंगलुरु, उसके बाद इट वाज कन्वर्टेड एज नेशनल रिसर्च सेंटर, एंड देन 2014 में इट वाज अपग्रेडेड एज एन इंस्टीट्यूट लेवल, एंड 2017 में हमारा नागपुर का सेंटर के मेन सेंटर के अंदर में आसाम में हम लोग एक रीजनल स्टेशन अभी लास्ट 5-6 साल से अभी शुरू किए हैं. ये जो 37 इयर्स का सफर में हमारा पूरा इंस्टीट्यूट with active involvement of my previous directors, I gratefully acknowledge and remember the contributions made by all my previous directors and all the staff of the institute, those who worked for last 37 years. काफी सारा लोग आज रिटायरमेंट हो गया है, यहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया, बट आज का डेट में मैं सभी को कृतज्ञता के साथ स्मरण करता हूँ, क्योंकि उन लोगों को कंट्रीब्यूशंस, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस के माध्यम से ही पिछले 37 इयर्स के सफर में हमारा इंस्टीट्यूट में काफी सारा टेक्नोलॉजीज डेवलप किए हैं. जो टेक्नोलॉजीज आपका नर्सरी से शुरू करके फील्ड में प्रोडक्शन रिलेटेड, प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड, देन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस सब रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हमारे इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हैं, जो 37 साल का त्याग तपस्या साधना के माध्यम से, उसके बारे में आज हमारा जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट है वो लोग, आप लोग इस इनॉग्रेल प्रोग्राम के बाद उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे. डिटेल्स में मैं उस टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि इसीलिए हमारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट बैठे हैं, टेक्निकल सेशंस में वो सब डिस्कस करेंगे. लेकिन कुछ चीज मैं जैसे आपको बताया, जो 1.5 साल से मैं इंस्टीट्यूट का जिम्मेदारी मुझे भारत सरकार ने दिए हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंसेस है उसके 2-4 पॉइंट्स आपको शेयर करेंगे. दिस इंस्टीट्यूट इज बेसिकली a national level, this is primarily a national level institute. हमारा जैसे अभी एग्रोविजन में सर गडकरी साहब का प्रोग्राम जो लास्ट महीने हुआ था, तो उसमें एक शिक्षक का स्पेसिफिक एक सेशन था जिसमें हम लोग थे, करीब 1,500-2,000 शिक्षक वार्ड्स भी थे, ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी साहब भी थे, बहुत सारा डिग्नेटरीज थे. उस मंच में मैंने जो चीज उधर बोला हूँ वही चीज मैं आपको कुछ चीज पॉइंट्स में बताएंगे. This institute is a central government institute. Primary mandate is research. Our institute's का primary mandate is research and to develop technology. उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेशंस का जो बात होता है, that is basically the job of कृषि विज्ञान केंद्र केबी का ICR इंस्टीट्यूट के अंदर में होता है, SAUs के अंदर में होता है, कुछ प्राइवेट्स के अंदर में भी और संस्था के अंदर में भी केबी के काम करते हैं पूरा देश भर में. तो जो फ्रंट लेवल जो डेमोन्स्ट्रेशंस का जो काम होता है, जो टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप होता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशंस जो फार्मर्स को दिखाने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए
ये जिम्मेदारी प्राइमरीली केवीके का। नेक्स्ट स्टेज में जो जो स्टेज आता है, ये टेक्नोलॉजी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द फार्मर्स, वो भी एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। जो संस्था में जो टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, जो केवीके को उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है फार्मर्स के लिए, जो फार्मर्स अपना आंखों से देखे, उसको कन्विक्शन बढ़े, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो उसको ट्रांसफर करने का जो जिम्मेदारी है, दैट इज बेसिकली द जॉब ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स का जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, वो प्राइमरी उनके अंदर में। लेकिन मैं जो देखता हूँ जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर में एक्सपेक्टेशंस जो है पब्लिक का, ये हमारा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टली फार्मर्स के पास जाके जो एक्सटेंशन रिलेटेड जो उम्मीदें हैं, मैं उसको बहुत बहुत दिल से सम्मान करता हूँ कि लोगों को एक्सपेक्टेशंस हमारे इंस्टीट्यूट से जो है भाई डायरेक्टली हर गांव पे, हर तालुका में, हर ब्लॉक में जाके एक एक इंडिविजुअल फार्मर्स को जो एड्रेस फार्मर्स उसका एड्रेस करें। ये जो एक्सपेक्टेशंस है, मैं उसको बहुत सम्मान करते हुए भी हमारा जो लिमिटेशंस है जो आपको मैंने बताएंगे, जे एक तालुका लेवल में एक स्टेट एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट में जितना नंबर का स्टाफ काम करते हैं एक तालुका लेवल पे, उससे भी कम स्टाफ हमारा एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में रहता है। वी हैव ए वेरी वेरी लिमिटेड स्टाफ, ओनली 16-17 साइंटिस्ट। हमारा मैंडेट है पूरा देश, यू अंडरस्टैंड। राइट नाउ पिछले 7 दिन से मेरा 4-5 स्टाफ जो है आसाम के लिए और अरुणाचल के लिए, आज पेपर में भी, यहाँ का नहीं वहाँ का पेपर में भी आए हैं कुछ ऑलरेडी, इसमें भी है, तो वो हमारा स्टाफ को हम अरुणाचल और आसाम में भेजे हैं। उन दो एक्सटेंशन एक्टिविटीज वो लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा जो मुख्य जो चीज कहना है, ये लोकल महाराष्ट्र के अंदर बोलिए, विदर्भ का जो एक्सपेक्टेशन है उसको सम्मान करते हुए बोलते हैं, जो हम चाहते हुए भी इंडिविजुअल फार्मर्स को जाके जो उनका जो इश्यूज को समाधान करना हम चाहते भी नहीं कर पाते, उसमें लिमिटेशंस होता है। लेकिन हम जो करते हैं, जो आपके माध्यम से, जो हम लोग जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के लिए, हमारा जो टेक्नोलॉजी है हम उसको बोलते हैं, वो लोग पास ऑन करते हैं। दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र, दिस इज फॉर ऑल द शिक्षक गोइंग स्टेट्स। पंजाब में भी शिक्षक होता है, कर्नाटक में भी शिक्षक होता है, तमिलनाडु में भी शिक्षक होता है। तो हर जगह को देखने का जिम्मेदारी हम लोगों को है, हम पूरा कोशिश करते हैं जितना कुछ हो सकता है। दूसरा एक चीज है प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन से। पिछले करीब करीब 20 साल से हमारा देश में करीब करीब 1.5 करोड़ टू 1.6 करोड़ का टोटल प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है पूरा देश भर में, नर्सरी प्लांट्स फॉर न्यू प्लांटेशन एज वेल एज रिप्लांटेशन विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड। तो 1.5 करोड़ का रिक्वायरमेंट तो है पूरा देश भर में। हमारा इंस्टीट्यूट में, इवन इट वाज नॉट इन आवर रिसर्च डोमेन, बट स्टिल फॉर द बेनिफिट कोई आए हैं दरवाजा खोल नहीं पा रहे, बट हम कोशिश करते हैं जो हमारा इंस्टीट्यूट से करीब करीब 3 लाख 3.5 लाख का प्लांटिंग मटेरियल, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इंस्टीट्यूट से बनाते हैं। वो प्लांटिंग मटेरियल हम लोग पूरा देश भर में से जो रिक्वायरमेंट आता है उसको हम लोग उसको सेल करते हैं। इंस्टीट्यूट का रिसोर्स जनरेशन भी जैसे होता है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पूरा देश भर में जाता है। आपको जानकारी हो कि खुशी होंगे, ये जो प्लांटिंग मटेरियल का जो टोटल जो बनता है ना, जो पूरा देश भर में जाता है, उसके 70% महाराष्ट्र फार्मर्स को हम लोग देते हैं। इवन दो वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, पूरा देश भर में जाता है हमारा मैनेज, फिर भी हम कोशिश करते हैं यहाँ का मेनली विदर्भ महाराष्ट्र का जो है 70% ऑफ आवर टोटल प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो विदर्भ फार्मर्स के लिए जाता है। हमारा इंस्टीट्यूट में पिछले 35 साल से रिसर्च करके काफी सारा अच्छा वेराइटीज डेवलप किए हैं, रिलीज किए ऑफिशियली। कुछ वेराइटीज जो जैसे धोलजी आते हैं तो मैं उनको सामने ही बताएंगे। आई एम ग्रेटफुल टू आवर सेक्रेटरी श्री धोलजी जो उन्होंने हम लोगों को इतना मदद किए हैं, जो महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए जो हम लोग जो वेराइटी डेवलप किए हैं, तो उसको ऑफिशियली रिलीज करने के लिए स्टेट वेराइटी रिलीज कमेटी का जो है उसके माध्यम से रिलीज करके 3 वेराइटीज को इमीडिएटली महाराष्ट्र के लिए ऑफिशियली रिकमेंडेशंस दिया है। इसमें एक चीज मैं आपको बताएंगे, बिकॉज ये आपको ये कुछ प्राइवेट कंपनीज they can directly, they are introducing directly from some varieties from other countries, सोच के जो हमारा देश में भी अच्छा चलेगा, वो डायरेक्टली आके उसको मल्टीप्लाई करके बेचते हैं। दैट इज देयर जॉब, वी हैव नथिंग टू से ऑन दैट। लेकिन जो साइंटिफिक प्रोसेस जो है, इवन उफ हम जो सोचते हैं जी चलो कोई वैरायटी ब्राजील में, कोई यूएस में अच्छा परफॉर्म करता है, हमारा जो साइंटिफिक जो अप्रोच है हम वहां से इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम लोग उसको पहले 1 साल 2 साल हम उसको स्क्रीन हाउस में रखते हैं। क्यों? नया कोई बीमारी उसका माध्यम से हमारा देश में नहीं आना चाहिए,
1 साल 1.5 साल क्वारंटाइन में रखने के बाद हम देखते हैं कोई सस्पेक्टेड नया पैथोजन नहीं है, तो देन ओनली वी गो फॉर इट्स फील्ड इवैल्यूएशन। फील्ड इवैल्यूएशन करने में भी आप जानते हैं जो पेरिनियल क्रॉप है 5 साल 7 साल 10 साल लगता है कि उसको फील्ड परफॉर्मेंस कैसे होती है। तो उसके बाद ही 8 साल 10 साल बाद ही हमको मालूम होगा ये जो हम लोग विदेश से जो इंट्रोड्यूस करके इधर लाए हैं, whether that particular variety which is good in Brazil or in US or any other countries, whether that is also equally performing well in our condition or not. उसके बाद ही हम लोग ऑफिशियली हम उसको वैरायटी के तौर पे हम ऑफिशियली रिलीज करते हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज इस क्वांटिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, वो भी रात भर नहीं होता। इट टेक्स सीड सोइंग टू आपको प्लांट्स टू रेडी, इट टेक्स कन्वेंशनल मेथड से 20-22 महीने टाइम लगता है। तो दिस आर द टाइम। सो मेनी टाइम्स हम पब्लिक फोरम भाई CCRI से कितना वैरायटीज डिले हुआ है, इतना लेट क्यों हो रहा है। सो दैट इज द रीजन इट टेक्स टाइम। प्राइवेट कंपनी का कोई नहीं है, दे आर इन द मनी मेकिंग बिजनेस, आई हैव नथिंग टू से। लेकिन एज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट वी हैव टू फॉलो सर्टेन साइंटिफिक स्टेप्स आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड बिफोर द रिलीज। इसीलिए कभी कभी डिले होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अभी जैसे काटर वैलेंसिया, फिर आपका फ्लेम ग्रेप फ्रूट, US 145, ये काफी सारा हम लोग विदेशी इंपोर्ट करके भी हम लोग इधर रिलीज किया है। उसका प्लांटिंग मटेरियल्स भी काफी सारा लोगों के पास गए हैं। सो दिस इज एज फार एज द प्लांटिंग मटेरियल इज कंसर्न। अनदर थिंग, इसके अलावा भी हमारा बहुत सारा टेक्नोलॉजीज, whether it is nutrient related, whether it's water management related, whether it is nursery related, fruit tree grafting or production of biocontrol agent, every and processing, product development, अलग अलग तरीका के बारे में हमारे इंस्टीट्यूट में काफी सारा टेक्नोलॉजीज डेवलप किए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं ना, कोई काफी बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर में आप गए हैं, तो एक एक काउंटर में आप देखेंगे ये अगर आपको कोई साबुन लेना है, आप साबुन का सेक्शंस में जाइए, उसमें 20-25 तरह का साबुन रहता है। आप बिस्किट्स का काउंटर में जाएंगे, उसमें भी 20-25 तरह का बिस्किट्स रहते हैं। हम लोग हर एवरीथिंग हम परचेज नहीं करते, हम जाते हैं, हम जो पसंद करते हैं, जे भाई यही साबुन हमको अच्छा लगता है कि यही आपको बिस्किट्स हमको अच्छा, हम पर्टिकुलरली हमको जो पसंद करते हैं प्लस हमारा बजट के अंदर जो फिट होता है, हम उसी को ही परचेज करके हम लोग घर में जाते हैं। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप योर माइंड ओपन। वही डेवलप के लिए आप जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हैं, जाते हैं, आज NRCC में आए दिन भर विथ एन ओपन माइंड, आप हमारा टेक्नोलॉजीज जो डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग जैसी जगह पे जा रहे हैं, हमारा भी ऐसे 5-7 लोग आपको अपना टेक्नोलॉजीज बताएंगे। नर्सरी प्रोडक्शन बोलेंगे, सूटी ग्राफ्टिंग बताएंगे, हमारा जो माइक्रोबार्डिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोसेस में आपको 20 से 22 महीने टाइम लगता है, रूट स्टॉक सोइंग से आपको रेडी टू सेल प्लांटिंग मटेरियल, उसको रिड्यूस करके 12 महीने में हमारे इंस्टीट्यूट का टेक्नोलॉजी है। ये सब चीज सिमिलरली इन अदर डिसिप्लिन्स आल्सो। तो आप सुनिए, ज्ञान लीजिए, उसके बाद चॉइस इज योर्स। जो आपको पसंद लगता है, जो आपको रिक्वायरमेंट में होता है, जो आपको इन्वेस्टमेंट के आपका बजट के अंदर फिट होता है, आप उसके लिए फिर आगे हम बात करेंगे। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, जे सिट्रस में हमारा इंस्टीट्यूट तो रिसर्च करता है, लेकिन ऑनेस्टली कन्फेसिंग ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी समस्या है, सब समस्या का समाधान हमारे पास है। आई नेवर कैन टेल दैट। कुछ समस्या है वर्ल्ड लेवल पे भी उसको फेस करना है। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस ग्रीन का डिजीज जो प्रॉब्लम है, वो पूरा दुनिया का प्रॉब्लम है, पूरा दुनिया को हिला दिया। आप इमेजिन करिए, आई वाज इन US 3 टाइम्स मैं US में गए थे। फ्लोरिडा का जो सिट्रस इंडस्ट्री है, $10 बिलियन टिल 2005, ओनली इन वन स्टेट फ्लोरिडा में US का $10 बिलियन फ्लोरिडा का सिट्रस इंडस्ट्री को उसका वैल्यू। 2005 में इस डिजीज सिट्रस ग्रीनिंग बोल के जो डिजीज है फ्लोरिडा में आने आज 2022 में 70% ऑफ देयर टोटल प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हुआ। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या? दे डिक्लेयर दिस, US गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है इसको नेशनल प्रॉब्लम बोल के। ऑल रिसर्च एक्टिविटीज इज सराउंडिंग टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डिजीज। अभी तक उसको क्यूरेटिव कभी भी प्रैक्टिकल कॉमर्शियल स्केल में अभी तक कुछ देख नहीं हुआ। हम लोग इस बीमारी को 1960-65 से हम लोग झेल रहे हैं, वही हम उसको ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा कहने का ही मतलब है, ये नॉट दैट सब समस्या का समाधान हमारे पास ऐसे नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स का समस्या का समाधान हमारे पास है। आप उसको फोकस करिए। जिसमें रिसर्च चल रहा है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो उसमें
हम लोग रिसर्च जारी रहेगा, हम पूरा उम्मीद करेंगे आने वाला साल में 2-4 साल 10 साल में उसका भी समस्या का समाधान हम हो जाएगा। आखिरी में मैं आपको एक चीज बताएंगे, ये पर्सनली एंड इंस्टीट्यूशनल वाइज एंड ऑन द तरफ से इंडियन सोसाइटी ऑफ सिटीकल्चर हम बहुत बहुत खुश हैं कि आज आप लोगों का जो बैकग्राउंड जब बताया ना, बहुत खुशी का बात है। नॉट ओनली फ्रॉम एक्सक्लूसिवली ए फार्मर, आप लोगों का अलग अलग बैकग्राउंड के तरफ से यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन योर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, वेदर इट इज इन इंजीनियरिंग फील्ड और इन IT sector or in chemical background or in business, anything. I really appreciate and welcome you all. ये आप लोग अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, but you want to do something in a new area where in future with the help and collaboration of the institute. मैं आपको इस इच्छा को मैं सम्मान करता हूँ एंड विश्वास करता हूँ आप सभी लोगों को योगदान से आज का सिट्रस इंडस्ट्री का वैल्यू हमारा देश में करीब करीब 25,000 करोड़ है। सिट्रस इंडस्ट्री का वैल्यू हमारा देश में 25,000 करोड़ है। मेरा पूरा विश्वास है हम सब लोग अगर एक से मिल के काम करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी प्रोडक्शन पोस्ट एंड देखिए आज हमारा इंस्टीट्यूट का जो एक्सपोर्ट जो है रफली अराउंड 250 करोड़ का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है हम जो करते हैं, बट इट हैज ह्यूज प्रॉस्पेक्ट। जो फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट जो हमारा मार्केट में अवेलेबल होता है उसका ए एंड बी ग्रेड का जो फ्रूट्स है दैट इज ओनली इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स फॉर फ्रेश फ्रूट, लेकिन सी एंड डी ग्रेड्स का जो फ्रूट्स है दैट कैन बी यूज फॉर प्रोसेसिंग, उसमें ह्यूज वैकम्स है। आई नो लॉट ऑफ पीपल आपके अंदर में जो पोस्ट सर्विस प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप लोग इंटरेस्टेड है, इस जगह पे अगर जो लैकुना है उसमें अगर आप फोकस करेंगे तो इसमें भी बहुत सारा प्रोडक्ट डेवलप करके नॉट ओनली फॉर आवर डोमेस्टिक पर्पस बट ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर आवर एक्सपोर्ट पोटेंशियल एज वेल। मेरा पूरा विश्वास है जे सब लोगों को माध्यम से योगदान से आने वाला साल में हम एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे जो हमारा जो 25,000 करोड़ का जो सिट्रस इंडस्ट्री है उसको हम सब लोग मिल करके आने वाला 5 साल 10 साल बाद इसको हम 50,000 करोड़ ये हम लेके जाना, ये अपना सपना है। हम पूरा कोशिश करेंगे और इसके माध्यम से हमारा देश का जो अपना जो टारगेट है जो अपना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर प्लेटफॉर्म में बोलते हैं जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर द कंट्री, उसमें हमारा सिट्रस इंडस्ट्री का योगदान है। हम 25,000 करोड़ से अगर 50,000 कर पड़ेंगे तो हमारा देश का जो सपना है जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाला साल में हम इसको पूरा ढंग से हम उसको अचीव कर सकते आप सभी के माध्यम से। इसके साथ मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for enlightening us with the different aspects about the institute, technologies developed, and the happiness कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स इतने अच्छे हैं। तो मैं ज़्यादा समय से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि मुझे भी आप लोगों को कुछ बताना है अपने टेक्नोलॉजीज के बारे में। बट आई एम श्योर कि आपको यहाँ से जरूर ऐसा मिलेगा जिसकी आप उम्मीद लेके आए हैं उस पर हमारा इंस्टीट्यूट खरा उतरेगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर पातुरकर सर से कि एक पब्लिकेशन को वो रिलीज कर दें इस मौके पे। ये हमारा संस्थान का न्यूज़लेटर है जो सिट्रस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सर। पहला है वॉल्यूम 27 नंबर 3, ये जुलाई से सितंबर 2021 का है। और दूसरा है वॉल्यूम नंबर 4 दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर 2021। ये 2 वॉल्यूम्स हैं जो सिट्रस इंडस्ट्री के लिए हमारे संस्थान की तरफ से जो भी डेवलपमेंट होता है, रीसेंट डेवलपमेंट्स हम इसमें डॉक्यूमेंट करते हैं। और अब ये क्वार्टरली था, अभी इसको 6 मंथली किया गया है। अब मैं अपने आदरणीय डॉक्टर पातुरकर सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर, आपसे से रिक्वेस्ट करूंगा सर काइंडली गिव योर चीफ गेस्ट।
इस संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप घोष जी, इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर दिनेश कुमार, मेरे सामने बैठे सभी संस्था के साइंटिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट, all other participants, students, ladies and gentlemen. Actually, मेरा इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेक्टर में मेरा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, बिकॉज आई एम ए वाइस चांसलर ऑफ एनिमल एंड फिशरी एंड डेयरी साइंस यूनिवर्सिटी। लेकिन हमारी दोस्त साहब बहुत अच्छे दोस्त है, उन्होंने बुला लिया, सर आप आइए आधे घंटे के लिए, इसलिए मैं आया। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड। हमारे पास भी वेटरनरी, डेयरी एंड फिशरी में देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स we also undertake in dairy, fishery and allied activities of animal husbandry. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ, ये तो संतरे की इंस्टीट्यूट है, लेकिन संतरे का जो छिलका निकलता है, हाउ टू यूटिलाइज दैट छिलका इन द एनिमल फीड, उसका हम साइलेज बनाते हैं, यानी अचार बनाते हैं उसका, और वो अचार को 10% के हिसाब से हम एनिमल फीड में डालते हैं। And there are so many experiments we undertake to, and it has been proved successful because हमारे आजू बाजू में जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको हमने पहले आइडेंटिफाई करना है, एंड आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंक करना है कि मुझे इनका कैसा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, सो दैट हम जो कर रहे हैं, जो भी बिजनेस करो, हर एक फार्मर के यहाँ 2-4 गाय, 2-4 भैंस या गोट, शीप, कुछ ना कुछ तो होता है। तो हाउ टू यूटिलाइज इफेक्टिवली दैट रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल विथ मी। अभी हमारे विदर्भ में बहुत सा कॉटन होता है, सीरियल्स होते हैं, तुराठी क्या बोलते हैं, उसका फाइनल प्रोडक्ट हम यूटिलाइज कर लेते हैं। व्हाट टू डू विद द स्टेम्स जो निकलता है, वो एक तो जलाने में काम आता है, या फेंक देते हैं, पड़ा रहता है, या शेकोटी करते हैं उसकी ठंडी में, कोल इंडस्ट्री में जा रहा है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने along with the IIT we have got a patent, we have digested those, we have made it in a powder form and digested it with some technology to break the bond of protein so that it can be digestible to animals, and उससे हमने pellets बनाए which can be used as a goat feed. So this is the cheapest source available for me. जो फेंक रहे हम, जला रहे हम, उसको अगर कन्वर्ट कर सको कोई फीड में, so that will be the best utilization for that. So ये सब एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जब आप करोगे, आज के पेपर में एक न्यूज है, 2 girl students from IIT has started online animal selling and earn some 3-4 crore rupees in a year. आज के पेपर में, अभी मैं सवेरे पढ़ रहा था, you have Licious, आप एग्जांपल देता हूँ, Licious, they are not veterinary and not technology people, they are just MBA people. They made an app from where you can place the order and your fresh fish, chicken can be delivered at your doorstep, like Ola or like Uber. So it is like this कि what, जब तक आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं करोगे, जब तक आप इनोवेटिव कुछ सोचोगे नहीं, तब तक एंटरप्रेन्योरशिप आप में जगेगा नहीं। वर्ल्ड में सबसे, अभी मैं ज्यादा संतरे के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो भी जानता हूँ, तो छिलका, कोई भी फ्रूट का छिलका, इट हैज गॉट बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। कोई भी छिलका लो, आप संतरे का लो, नींबू का लो, मौसम्बी का लो,
pomegranate का लो, which can act as a good preservative if you extract it properly. उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होना चाहिए वो एक्सट्रैक्ट आप कर पाए, so it can be used in any type of food as a preservative to extend the shelf life. लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, how to, either whether it is aqueous extract, whether it is a solvent extract, उसको ड्राई करना है, कैसा करना है, what is the purification process. ये जब तक आप सब ये चीजों में पढ़ोगे नहीं तो आपको ऐसे एक दिन के ट्रेनिंग में तो होगा नहीं. या you have to employ some people who knows the technology. So like that you have to think out of box कि मुझे ये करना है. वर्ल्ड ओवर में हमारे पास भी ऐसे बहुत से ट्रेनिंग होते हैं. Those who are interested, you can contact from our website. There is the director of extension, wherein we can, through him, we transfer our technology to all the entrepreneurs, you can say. Now there are so many success stories in our field also. People have adopted our technology and then now they are running a successful business. World over, one example, world over, best quality cheese is prepared from a goat milk. How many cheese is prepared in our country from the goat milk? Goat ka population, we are 5th or 2nd in goat population in the world. Means goat population is there. We have a good breed of goat who can give good quantity of milk. जमुनापारी है, 4-5 लीटर दूध देती है, छोटी सी है, मेंटेनेंस कम है. So how you can extract this and develop a business out of that? For that you require technology. And we have animal science, veterinary science, dairy science, and fishery science. Those who are residing in this Chandrapur, Gondia, Bhandara, Gadchiroli district, you have huge potential of fisheries. Fish feed manufacture from the west. उसकी जानकारी लो कि how to manufacture fish feed. कितने तालाब है, कितने water bodies. We have more than 20,000 water bodies in all 11 districts of Vidarbha. We have mapped that. कि 20,000 water bodies है. लोगों को लगता है कि अपने आप फिश बढ़ेगा, कुछ डालेंगे नहीं और अपने आप उसको पकड़ के बेच दो. It should not be. Good quality of seed. हमारा पूरा फिश सीड जो आता है वो छत्तीसगढ़ से आता है या वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आता है. We don't have fish seed. इतनी वाटर बॉडीज है हमारे पास, इतने तालाब है बड़े, गोसी खुद से लेके कितने डैम से. So these are the, हमारे पहले तो लैक्यून है कहाँ है, हमारे पास कम क्या है, and how we can enter in that. That is a real entrepreneurship. कि मुझे क्या करना है फिर, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द गैप एंड वो फिल करने के लिए मुझे क्या करना है. उसके लिए हो सकता है कि आपके पास एक्सपर्टाइज ना हो, आप 10 लोगों से बात करो. पीपल आर लाइक दिस इंस्टीट्यूट, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट इन द महाराष्ट्र हु कैन गिव यू नॉलेज कि सर ये करो, ये कीजिए, so that at least some entrepreneurs can come out with this. गोटरी में बहुत बड़ा काम हो रहा है अभी, क्योंकि मटन का भाव कभी आपने कम होते हुए नहीं सुना होगा. चिकन का होता है, मटन आज भी 700-800 रुपए किलो ही बेचा जाता है. So this is the example. So like this we have to identify the business, and जब तक आप वैल्यू एडिशन करोगे नहीं, वैल्यू एडिशन जब तक करोगे नहीं उसमें से पैसा निकलना नहीं है. मैं संतरा आप कितना भी बेचो बाजार में, उसका एक लिमिटेड पैसा है, लेकिन जब तक आप वैल्यू एडिशन करोगे then you can fetch a good price in the market. And there are so many technologies which are available world over, so many artificial intelligence which are available. Mechanization आ गए हैं. वो सर्विस टेक्नोलॉजी में मैं तो इनका क्यूआरटी मेंबर था.
जो एग्रीकल्चर आईसीआर में, so many things. And animal husbandry, dairy, fishery contributes only 27% of the GDP of agriculture. यानी उसका स्कोप 27 से 50 तक गया तो कितना होगा? You can imagine. So you think कि what is requirement of the market and what I can do and what is my expertise, what is available with me. मेरे पास लैंड है, मेरे पास क्या है. वर्ल्ड ओवर एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है वो जीरो ग्रेन बेस्ड एग्रीकल्चरल वेस्ट से हम पालने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि मेरी गाय या भैंस 20 लीटर दूध दे फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट विच इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग. कड़वा कुट्टी जो भी बचता है हमारे पास वो खिलाने की कोशिश करते हैं. लेकिन जो ब्राजील में, अर्जेंटीना में गाय भैंस है, देयर ग्रेन्स टोटली सीरियल बेस्ड ग्रेन्स फीड करते हैं. देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट दैट. हम बोलेंगे कड़वा कुट्टी खा के वो 20 लीटर दूध दे या ड्राई घास खा के दूध दे, हो नहीं सकता. सो 20 लीटर के, और मैं फार्मर्स को किस मुंह से बता सकता हूं कि तू 4 लीटर वाली गाय पाल, विच इज नॉट इकोनॉमिक. 200 रुपए 4 लीटर दूध, 40 रुपए लीटर पकड़ा, 160 रुपए में उससे खाना का खर्चा नहीं निकलता. And you cannot expect 20 liters unless your animal gives 20 liters of milk, or you do value addition. उसका animal products बनाओ. So many things are available in front of you. You all came here for entrepreneurship. So many technologies are available in agriculture science, in animal science, in veterinary science, in dairy science, in fishery science. You have to choose appropriate. Do your homework first. What is available with you, how much quantity is available surrounding you, and what you can utilize the best. That is the gimmick of success. So I must thank all these people who have invited me to speak in front of you and share my views or knowledge with you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर. देखिए हम कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सर का जो फील्ड है और उन्होंने कैसे कोरिलेट किया एनिमल साइंस को फ्रूट साइंस के साथ. सर आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर कोरिलेटिंग द एनिमल साइंस, बिकॉज नॉलेज हैज नो बाउंड्स एंड वंस वी कम आउट ऑफ द बाउंड्स नो देन वी कैन डू समथिंग ग्रेट. अदरवाइज फॉलोअर्स आर नेवर बीइंग ए लीडर. सो ट्राई टू बी ए लीडर, दैट इज बीइंग ए वन एंटरप्रेन्योर. So I thank you from my side. Now I request Dr. Sir, one thing more I want to tell you. You are talking about the waste utilization. Waste utilization, we had done some work, sir. When the fruit drops, it is going wasted. 0 rupees value, sir. We had given a technology that how the hesperidin can be extracted from them, and now those fruits are being sold with the 60 rupees kg. So 60 times we doubled that income, sir. So that work we had done in 2016. That जो fruits drop होके आप झाड़ू मार के निकालते हो ना 0 rupees में, that can be worked as to extract the nutraceutical point of view as a food supplement. So चलिए वो हम बात करेंगे अपने lectures में. Now I request our this nodal officer Dr. Sangeeta Bhattacharya to propose the vote of thanks. Thank you, sir. So as we reach towards the end of our inauguration program, I would like to extend my heartfelt thanks to our Honorable Director, Sir, Dr. Ghosh. Thank you, sir, because without sir's guidance and planning, such kinds of programs means
cannot arrange, and he's always instrumental towards means guiding us as to how to make our programs more successful. So thank you, sir, for your guidance. I would like to thank our honorable VC, Dr. Paturkar, sir, chief guest, who is our honorable chief guest today. Thank you, sir. Indeed, it was enlightening to hear you, sir. As Dinesh sir already pointed out that he is not of our field, but still with his huge knowledge like an ocean, so he has guided us and interlinked both the fields together. Thank you, sir. And in future also, we would like to hear more from you. I would like to thank Dr. Dinesh Kumar, sir. He's the convener of this EDP program today. So, sir was instrumental in planning everything from first to the last. Thank you, sir, for guiding us. And today, in between us, our scientists have taken out time from their busy schedule. So, our institute scientists and staff, I thank you all for attending today's program, and all the participants who have come from all over Maharashtra and are eager to learn from us today. So thank you all, and all the staff of CCRI who were part of different committees, and also means those who were not part of the committees but indirectly helped us a lot. ESL, PME cell, and computer cell staff, extension lab staff, and also PhD lab staff. I thank you all. After this, we will go downstairs for a group photo session in the porch. And after the group photo, we will be having a short tea break of 5 minutes. Then we will assemble together again back to this hall, and our technical sessions will start. Thank you.
सबको अंदर बुला लो, सबको अंदर बुला लो, सेशन शुरू हो रहा है। थोड़ा सा एक अर्जेंट मीटिंग में वी सेड विल स्टार्ट। अच्छा नमस्कार, हमारा टेक्निकल सेशन अभी शुरू होगा। तो आई एम सॉरी फॉर अ लिटिल डिले हो गया, देयर इज अ कॉल फ्रॉम माय बॉस फ्रॉम दिल्ली। तो अभी एक मीटिंग अटेंड करेंगे। तो मेरा जो कलीग है डॉक्टर आशुतोष मुरकुटे एंड डॉक्टर दिनेश कुमार, they will continue with the technical session. Now I invite Dr. Murkute to continue the program. And good morning to all of you. As we are starting our technical session, and since the time is too short, we have to complete around 7-8 lectures. We'll try to be very concise. So just look, keep your vigilance, so that whatever points related to you are interesting to you, that only will focus and we will skip. Otherwise, it would be difficult for us to cope up on this slide. So today I am dealing with the commercial citrus varieties. Basically, our institute is a crop-based institute, and release of new varieties is of paramount importance. So I'll skip all this part. See, this is the citrus diversity. Generally, we know, most of us know 3 crops only, that is mandarin, sweet orange, and acid lime. But there are other crops also, like pomelo, grapefruit, and this is complete diversity. And being acidic, all these fruit crops are of major importance. Wherever possible, they have been exploited. You'll be surprised to know the highest exported material among citrus is citrus macroptera, that is Satkara. It is being exported from northeastern region, and it is traded in dollars. The commodity market is there. It is listed in some of the commodity markets also. So, so that is basically the diversity, and as an entrepreneur, you can
deal with any crop which gives you a higher premium. So why we need a cultivar? Generally, it is asked a different fora that we want a new cultivar or new variety. So many times I ask this question, but people are not that much clear. At least farmers are not clear. But traders and other people, they are quite wise and they have a very peculiar idea about what type of cultivar they want and why they need. So there are 5 types, basically fruit basket, different fruit basket, nutritional variations, because the nutritional values of acid limes are far different than mandarins, and it is again far different than your common fruit. So you have to target that group. Taste variation also is one of the aspects when we think of some business. The harvesting window, that is throughout the year, you should have citrus cultivars in the market. So see, this is the Florida industry of citrus, and you can see the citrus fruit is available throughout the year. It is not that acid lime or mandarin or it is, but there is some sort of citrus is available, and that can be used for different purposes. But when you think of Indian, so this is the big gap in this. So many times farmers want this for covering this gap. It is not that acid lime is going to replace mandarin or mandarin is going to replace sweet orange, but ultimately you need that there is citrus should be in the market to have diversity in the basket. So we worked upon it over the 35 years of this institute, and different citrus cultivars under different types we have released. Each has its own merits and demerits and its own arena. So accordingly you have to see. And during the time we have released this much varieties under 9 different citrus cultivars, I would say, have been released for commercial production, and there are under some are under pipeline. As in the morning our director has said that it takes around a time of 20-25 years to release a particular variety for commercial release as far as government institutes are concerned. If you are from private organization, you can bring, there are no such specific legislation for that. But for us, certainly we do have. So this is one of the important recommendations from our institute, that is sweet orange, and it is a variety is Valencia. And there are number of variants of Valencia, but Cutter Valencia we have recommended, and we have evaluated for around 15-20 years at our institute, and through state release variety committee it is being released. So now farmers can get plenty subsidy and other benefits of state government from Maharashtra for this variety. So Valencia is basically traditionally late bearing variety. So from November, December it comes for harvesting as compared to other sweet orange varieties. So this is a tree as compared to color, and you can easily see the color difference. Then second variety is mandarin seedless 4 clone. Basically in citrus, if the fruit is having less than 4 seeds per fruit, then it is considered as seedless. It's a commercial seedless. It is not completely seedless. So we identified that clone and we have released from our institute. It has got around 2.2 seeds per fruit. And there is again, if your Ambiyawar fruits, if you see, there are number of seeds will be lesser as compared to your Brugbar seeds, fruits. So, but this is in data is of Brugbar. So otherwise, it is as par with your other parameters of mandarins are concerned. Only number of seeds, they will be less. So we have recommended this second variety. So meter. So planting meter. This data is of 6 by 6 meter only. Spacing. So this is a bearing tree. See, normally this much seeds will be there. So we are No, planting distance is not related to your soil property. It is basically to accommodate more number of plants per unit area.
This is what your concept for scientific point of view it is valid, but implementation point of it will be very difficult, and nobody has come to us. नहीं, आपकी जो बात है ना, सॉइल टाइप अलग अलग होगी तो उसका रिकमेंडेशन अलग जाएगा. न्यूट्रिशन का रिकमेंडेशन वी हैव फॉर डिफरेंट सॉइल्स. नहीं, दैट्स व्हाट आई सेड कि आप जो कह रहे हो बराबर कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन वो रिकमेंडेशन इज फ्रॉम आप. इट इज नॉट रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ प्लांटिंग, इट इज रिलेटेड टू योर सॉइल प्रॉपर्टीज व्हाट यू आर सेइंग. उसके लिए अलग अलग रिकमेंडेशंस है ना, और साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड न्यूट्री स्टैंडर्ड्स फॉर बेस्ड ऑन योर लीफ कंटेंट. तो उतना अगर लीफ कंटेंट्स कम है तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव योर न्यूट्रिशन. इट हैज नथिंग टू डू. So third variety is Pomelo NR65. We have released, this is a red colored variety. It is also released from SVRC. And fruit weight is around 800 grams per fruit. And if means it comes to 500 around fruits and 6x6 or 5x5 planting material, then you can reap around 94 tons per hectare. 800 grams means one family of 4 person can have a fruit, couple of fruits for a week also. So that is the beauty, and because of some nutritional properties, it is recommended for persons having ailments of kidney or related to diabetic conditions. So this is also we have released. Then yes, Pomelo 145. The other parameters are also the same in the 145, but it is a white fleshed. Earlier is red fleshed, and that is because of lycopene contents, and this is a white fleshed. Then the fifth variety, it is a flame grapefruit. Generally it is it's a notion rather, you should have only sweet or sour blend taste for citrus, and it should but as far as grapefruits are concerned, those are not that sweet. Only a tinge of sweetness you might see in that fruits. Otherwise those are either sour or some bitterness is also there. So around 50% juice percent is there in this flame. This is introduced material from Florida, and around 250 grams to 300 grams fruit will be there. This is a deep red color. If you have seen the photographs of NRCC Pomelo, it is not that deep red. I mean, if you squeeze the juice, then you might see it's just like a blood color. So we have released this variety also. And grapefruit, sometimes it confuses with your grape varieties, but bearing habit is of in bunches, at least 5-6 fruits they bear in the bunch. So this citrus type is known as grapefruit. So we have the plants ready with us or selling? Yeah, we are already selling this plant, but as in the morning sir said, no, we have very limited plants. We are seeing some good nurseries to propagate all these varieties at larger scale. There are variety people who are doing, but then again, as far as grapefruit and pomelos are concerned, those are not because of lack of awareness, or you may say lack of proper market. People are hesitant to take that. Your policy, you are just selling 100 plants on 1/7 Satmar. Yeah. What about this? What is your policy about selling this? No, there are whatever people are asking. People are not asking more than 5-10 plants, so there is no question. At present, we don't have any bar for that. And see, when we say that we are selling 100 plants or 200 plants per Satbara, our intention is that we are claiming our material is disease free, and our intention is that our plants, wherever they are going, they should be used as a mother plant, not as a bearing plant. So that's why we restricted that the people should nurture those plants in a good condition. They should get mud sticks out of that, and they should prepare their own multiplication only. People are abusing, I would say, means this, not to be officially put it, but those plants are not to be used as a bearing trees. Those are only mother plants. For all these plants, you recommend the same distance? No, there are different distances. Yeah, grapefruit and especially grapefruit can be cultivated at 5x5 also. But we haven't come any standard package of practices for grapefruit and pomelo. We have just released based on the recommendations. First, the variety is to be released, then there is cultivation practices are to be simultaneously. So it is under process. But right now we are recommending 5x5 or 6x6 only.
This is another grapefruit variety. But it is a seeded one. Earlier flame, if you see, it is a completely seedless, commercial seedless. At the most 2 seeds you find. This is a seeded one, but nutritional. This is rich one. Narcissi grapefruit 6. And bearing habit is also being seeded fruit. The fruit size is also bigger than seedless fruits. Then the 7th variety is acid lime 7. We are claiming that around 50 tons per hectare yield can be reaped out of this. All these are selections, only clonal selections. So this is the NRC 7. Uniform color and uniform size of the fruits across these harvest. And NRCC 8, the difference between NRCC 7 and 8, there's 8 gives you bearing in the bunches, clusters, 4 or 5 fruits in per cluster. So harvesting is bit easier as far as 8 is concerned. Otherwise, yield and other potentials are at par. So, yeah. नहीं वो तो प्लांट की हैबिट होती है. योर सोर्स टू सिंक रेशियो इज द सेम. देयर इज नो डिफरेंस इन दैट. ओनली बियरिंग, सॉलिटरी बियरिंग के बजाय बंच बियरिंग होता है. वो उतने रहेगा ना. यू आर नॉट रिड्यूसिंग द कैनोपी. तो वो प्लांट में जिस सूट पर आ गया एक साल 60% में एक प्लस आएगी, उसको दूसरी नहीं आएगी, जिसको दूसरी आएगी उसको तीसरी नहीं आएगी. तो वर्चुअली जो सिंक, जो न्यूट्रिएंट और वाटर का सिंक फोर्स रेशियो है वो. Then this is one of the rootstocks we have recommended. Alamo rootstock is a citrus species, basically citrus alamo. As compared to your Rangpur lemon, rough lemon, the lesions of your Phytophthora are bit less in this particular species. The rest of other parameters are at par, and it can be used as one of the rootstocks additional to whatever we are recommended. This your Rangpur lemon, rough lemon, those are well established rootstocks. Apart from that, this is one of the rootstocks, alamo. So yield wise and other parameters are quite at par, but Phytophthora infestation means this is a tolerant. I am not saying it is a resistant, but it's a tolerant. So these are 9 varieties we have developed, and most of them, 3 of them have already come out of a state variety release committee. So that can be propagated, and you can have benefits of the state policies to purchase those and planting those. Rest those are in the pipeline of the same SVRC, but otherwise the institute has recommended that, and you can take it for cultivation and other purposes. So thank you. If you have any problem related to or question related to variety, you can ask. Otherwise, yeah. Already it is selling. Yeah, there is no question. We have selling. आपको बनाना है. हाँ, दे देंगे. People are taking it. 5-5, 10-10 प्लांट तो सबको ही दे ही रहे. सॉरी, आपका पर्पस क्या है? म्यूजियम बनाना है कि उसका आगे के कुछ करने के इरादे हैं? काफी सारे हमारे स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज में सेंटर प्लान देखेंगे. कहना है सर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में दो प्रोविजन थीम पार्ट. You can do that. You can do that. We'll provide you. As far as our institute is concerned, we have around 600 types of citrus. एक ही खेत में नहीं है, but in 200 acres of land we have. हमारे premises में आप घूमेंगे, and flowering time or fruiting time of that, most of the citrus comes around your October to January. So during that period, you can find means in fruit difference also there are 60-70 different types of fruits, colors, shapes, all like that. That is, we call it germplasm. This is national active germplasm site. But you need not do that. 8-9 the commercial varieties you can easily do and propagate. It's a good idea. नहीं, पार्क के लिए तो हम कितना भी दे सकते हैं आपको. मैंने आई टोल्ड यू ना 600 varieties are there. Yeah. Release तो 9 है. Release we can give you 9 right there.
Other material you have to take, there are certain guidelines of ICR, that is a material transfer agreement. If you are doing that, then you can get number of varieties also. Seedless varieties, the performance कैसा है as compared to the other normal varieties? It is at par. It is not a genetically or breeding material, no. It is routine clonal material. Only thing is because of some mutations, seedlessness is incorporated in that. No, it is a commercial seedless. I already said it is a commercial seedless. It is not seedless. Yeah. Huh? तो वो पहले अंडा की पहले मुर्गी वाली आप सवाल पूछ रहे हो, बट एज फार एज सिट्रस साइंस इज कंसर्न, सिट्रस इंडिका जो था और सिट्रस मेडिका, इट इज कंसिडर्ड प्रोजेनेटर. उसके बाद फिर कुछ म्यूटेशन है, फिर नेचुरल वेरिएशंस है, फिर क्रॉस होते गए, नेचुरल क्रॉसेस होते गए. तो अभी जो थिंकिंग जो है उसमें 3 कल्टीवर, 3 स्पीशीज जो है, सिट्रॉन, सिट्रस मेडिका, सिट्रस रेटिकुलेटा जो मैंडरिन है वो, और आपका पमेलो सिट्रस ग्रैंडिस, ये 3 को ट्रू स्पीशीज माना जाता है. उसके आगे जो इवन आपका मौसमी हो गया, पमेलो, ग्रेपफ्रूट, वो सारे नेचुरल हाइब्रिड्स. तो दिस इज आज की जो स्थिति है साइंस की, वो इतना बताती है. उसके बाद नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन होते रहता है, इट्स अ प्रोसेस गोज ऑन. नहीं, पूरे भारत सरकार का एक प्लांट पीपीवी है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एक्ट और अथॉरिटी है. ऐसे इंडिया में आपने जैसे फार्मर बताया ना, दे हैव अराउंड 1000 फार्मर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, दोज हु हैव आइडेंटिफाइड देयर ओन वैरायटीज एंड कल्टीवेटेड. सो दिस इज नॉट न्यू फॉर इंडिया. म्यूटेशंस भी नहीं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है. कुछ किसान अपने आप हाइब्रिडाइजेशन करते भी है. सो कुछ इंट्रोडक्शंस भी होता है जो फॉरेन से आता है डायरेक्ट मटेरियल. सो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ इंप्रूवमेंट. तो भारत सरकार के वैसे हजारों में किसान है जिन्होंने अपनी वैरायटीज डेवलप की. और दुनिया में आपके नॉलेज के लिए बता दूं, भारत ऐसा एक देश है जहाँ फार्मर को साइंटिस्ट का दर्जा मिला है. हाँ, वो अपनी वैरायटी बना के अपनी वैरायटी रजिस्टर करके उसका ये बेच सकता है. जैसे पीपीवी एफआरए अथॉरिटी है, एक्ट भी है दोनों. So it is there. So you are also encouraged. Means this is open offer to all of you. You can develop your own varieties and register under, and you will get royalty also. और वो किसी कम्युनिटी ने अगर एड्रेस किया होगा तो वो कम्युनिटी के नाम से रजिस्टर होगा. कम्युनिटी मीन्स कोई ग्राम पंचायत होगा, जिला होगा, उसको मिलेगी और उसकी रॉयल्टी भी उनको मिलती है. सो देयर आर नंबर ऑफ सच वैरायटीज आर देयर इन इंडिया. उसकी जो रॉयल्टी है एक्सपोर्ट होने के कारण या मार्केट होने के कारण, उनकी वो ग्राम पंचायत को या उस लोकेलिटी को मिलती है, या ग्रुप ऑफ पीपल को मिलती है. इट इज अ रूटीन प्रोसेस. सर, जैसे आपने बताया कि इसका जो आउटपुट जो है इन टर्म्स ऑफ टन में बताया, टन होता है. इसका अपन एक आउटपुट जूस के हिसाब से ऐसे निकालते, ऐसा कुछ बताएगा आपके पास? जूस के हिसाब से भी है, पर प्लांट के हिसाब से भी है. हाउ यू आर मैनेजिंग एंड व्हाट इज योर पर्पस. हाँ, यू कैन डेवलप मॉडल्स. वी आर हैविंग ऑल दिस डेटा. हम तो जनरल अभी आपको बता रहे कि ऐसा है. आपको कोई मॉडल में अगर फिट करना है उसको, तो वी कैन गिव दैट डाटा आल्सो. ये आपने जितना वैरायटी बताया उसमें कमर्शियल टेस्ट वाइज कमर्शियल एक्सेप्टेंस किसको ज्यादा है? नहीं, कमर्शियल एक्सेप्टेंस सभी का है. अब नींबू की यू कैन नॉट, मैंने पहले बताना, नींबू जो मुझे खाने की इच्छा है तो मैं उसको मैं संतरे से रिप्लेस नहीं कर सकता. तो संतरा तो फिलहाल तो नागपुर मैंडरिन एक ही संतरा है, दूसरा संतरा है ही नहीं. क्लोनल वेरिएशंस जो है वो हिसाब से कभी ज्यादा पोटेंशियल होता है, किसी में थोड़ा सा डिजीज रेजिस्टेंस कम ज्यादा मिलता है, टॉलरेंस नॉट रेजिस्टेंस. तो उस हिसाब से वो क्लोनल सिलेक्शन होते हैं. बट अदरवाइज वैरायटी इज देयर. नागपुर मैंडरिन इज ओनली वैरायटी. मौसम्बी में न्यूसेलर है और दूसरी वैरायटी हमने लाई, दैट इज कटर वैलेंशिया. दो वैरायटी हो गई, बट संतरे में एक ही है. हाँ जी, हाँ हाँ, कमर्शियल सीडलेस, नॉट कंप्लीट सीडलेस. Sir, do you have a video of juice factory here? जूस फैक्ट्री का वीडियो नहीं हमारे पास, तो प्रोसेसिंग की लैब ही है हमारे पास. यू कैन विजिट दैट. स्मॉल स्केल लैबोरेटरी इज देयर. नहीं, टिश्यू कल्चर तो किसी भी ट्रे में पॉसिबल है. इट्स अ प्रोपोगेशन टेक्निक. वो तो मैडम का लेक्चर होगा ना.
हाँ मैडम का लेक्चर उसमें आपके कैंपस में हाँ है ना डाउनस्टेयर। हाँ लेबोरेटरी है, आपको जाके दिखा भी सकते हैं। हाँ एनी टाइम यू कैन कम, अदरवाइज ना बाकी के लेक्चर्स भी इतनी इंपॉर्टेंट है, यू विल मिस दैट अदरवाइज। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन निकाल के रखिए। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है वो है डॉक्टर एन विजया कुमारी मैम। मैम प्रिंसिपल साइंटिस्ट है हॉर्टिकल्चर के, और अभी जो आपके क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू टिश्यू कल्चर एंड एवरीथिंग मैम अभी क्लियर करेंगे। ये लेक्चर सुनने के बाद आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैम एड्रेस करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट का लेक्चर होगा जैसे आप बोल रहे थे डॉक्टर दिनेश कुमार सर का, इट विल बी एट द लास्ट। तो आपका जो भी पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड प्रोसेसिंग वाले क्वेरीज हैं वो आप सर से पूछ लीजिएगा। आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो भी टेक्नोलॉजी हमारी वगैरह तो चीजें तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप हो Yesterday date 21st पे EDP का उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। एक फोल्डर है जो भी टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं होती अभी तो सर्च में करो ऐसे ये सारी टेक्नोलॉजी कौन सा डेट का है वो देखो। 21 12 22 12 पहले यस पहले 1 2 3 4 यस कौन सा मुझे नहीं समझा। पहले एसटी सभी मुझे बताने एक के बाद एक। हाँ 1 2 3 4 चारों कितना है मेरे पास। हाँ ओके और भी टेक्नोलॉजी देखिए ठीक है आपको ना कि कोई मूड बना के आता है यही लेना है, ऐसा बिल्कुल ओपन माइंड से है। Okay, I welcome ma'am for the next lecture. Good afternoon, everyone. I'm Vijay Kumar, Principal Scientist from the Tissue Culture Lab. Right from the beginning, I'm specialized in tissue culture, citrus breeding to some extent, and in planting material production. So I'm going to say some of which are the technologies which we have already commercialized and signed the MOUs with the private agencies. Those are only I'm highlighting now here. One is the in vitro shoot tip grafting technology. Many of you, I think you might have heard shoot tip grafting technologies. Okay, that is mainly used for elimination of the pathogens from the citrus cultivars. Okay. आगे मूव होता है क्या? हाँ, these are the main merits of the in vitro shoot tip grafting. One is for the elimination of the pathogens from the mother tree, your citrus cultivars, your selections. And that is second one is the true to typeness, precocity, and it is a proven method of the, you can say, therapy method for the whole the world. Almost more than 21 countries are based on the in vitro shoot tip grafting in production of the disease-free planting material. And these, once you have standardized, it is almost applicable to almost all the commercial citrus cultivars. And the main objectives is they are elimination of the pathogens in allied cultivars and production of the disease-free certified micrografted mother trees. And we have studied in relation to that the age, type of the rootstock, method of the grafting, size and source of the shoot tip, and also what are the growth regulators working to improve the success of the shoot tip grafting. And we have to do the lab to land transfers also. So in what is in vitro shoot tip grafting? I think any one of you, you are familiar so far among the entrepreneurs. This is nothing but in vitro, it is a miniature grafting. In vitro shoot tip grafting of minute shoot tip measuring 0.1 to 0.3 mm on an etiolated seedling, decapitated seedling rootstock. And it is a prerequisite for all the like citrus sanitation, quarantine, and certification programs. And for production of the disease-free, it produces the disease-free true to type plants, unlike your other tissue culture techniques, whether it is a nucellular, embryonic, in vitro, and in vivo. And this is known as highly specialized tissue culture technique.
And the main impact of this technology, it is like it has facilitated establishment of the like cleaning the local selections and production of the disease-free planting stock, establishment of healthy citrus orchards, which will boost ultimately the production, and also it gives a longer longevity. And it is applicable for almost citrus producing regions of India. This is not a effective, not working properly. Basic tissue culture, here what are the facilities they are required? Raw material. You should have a base, whosoever wants to take up this, you should have a basic tissue culture lab. You should have your own cyan mother blocks, seed blocks also, and a trained manpower you should have. Who doesn't have, they can take the training from us. And like if any like similar technology products are already manufactured in India, the genesis, origin of this technology and practical implementation of the technology, it is at CCRA, Nagpur. And we have already done on pilot scale. We have the facility for commercial production of the disease-free planting stock. And there is maybe question whether it is patentable or not. Of course, that time when we started this technology, it was having the scope, but already we made the publication. So now there is no scope for the patenting. So actual process I am coming. How you do the in vitro shoot grafting to produce the base nucleus stock. Like we will take whatever this standard rootstock of that particular region, and both the seed coats we are removing, and we will give a surface sterilization treatment with sodium hypochlorite solution for 5 to 10 minutes. Then after that we will be inoculating in the standard MS medium, which is already there in the public domain. Then when we will take up this 2 weeks old etiolated seedling rootstock, which is grown in the dark. And this is the mother tree source. Whatever, like based on the horticulture performance, first I'll go for the selection of the best mother trees based on the yield and quality. That I will be collecting, and then I'm maintaining in a protected our greenhouse conditions. There we will take the shoot tip. In case if it is not available, you can maintain them also under the through in vitro source also. I'll get the shoot tips. So these are the shoot tip source, 3 centimeter length and all I'll take. We will be stripping off all the larger leaves, and this much this length shoot tip I will be doing using for the shoot tip grafting. And this is the decapitated rootstock, which will be doing with the under aseptic conditions in a laminar flow with all the tissue culture paraphernalia. It is like a microsurgery. And this is a 3 weeks old. Once after decapitating, at the tip of the decapitation, here with the help of the microscope and the tissue culture paraphernalia, small like surgical blades and also needles and all, I will be isolating that shoot tip, minus shoot tip, and we will be giving an inverted T incision. Here inside, in contact with the cambium region, I will be placing the minute that shoot tip, and which will grow within 3 weeks like this. Here, this is your in vitro rootstock. Whether it is like a beginner, we will say triacetyl rootstock. You take any rootstock with who are having the expertise, and this is your Nagpur mandate, which is already successful. How you take it to from lab to land. This is success. And when we are doing the direct transfer and all, we are losing the plants due to contamination. So the survival rate is here, it is less. Then we are doing the double grafting technique, and these are the rootstock which are maintained under the sterile conditions, 1 year old rootstock. I am doing through the double grafting technique. That is another innovative propagation technique. 2 techniques are required. One is in vitro shoot grafting, another innovative propagation technique for the lab to land transfer. Here we have already done. This is a successful double graft. So, like tissue culture means, if you another nucellar embryonic, I was telling, when we are developing, see, this is the jewelry, you can see, you will get a thorns and all. This phenomena is not there in vitro shoot tip grafting. You don't find the thorniness provided the shoot tip is taken from the adult tree. And see, this is the base nucleus stock I have produced through the in vitro shoot tip grafting, and these are all the tissue culture source plants. Then, even though it is a foolproof technique worldwide, still we give for the indexing, for testing, like how many of the mother plants might affect, how much elimination I did. So 90% of the plants we will give to the, like we will index for the major graft transmissible diseases of the central India. CTV, citrus disease virus, greening bacterium, mosaic, ring spot, and viroid. All the 5 diseases, I will submit this my base material
to the virologist and also bacteriologist who grace here among the audience, Dr. Das. He is dealing with the greening disease, and they will index test my base material. How much they'll take the budwood and they'll test, and most of my 90% of my base material, they are free. When they are free, that all those healthy material I will be maintaining in a protected foundation block like this. Okay, and from here I'll take my, this is the budwood source for large scale multiplication. See, this is the field foundation block. Here also I have planted my tissue culture plants, and so this is the thing we have to, this is how you are producing the base nucleus stuff, how you are eliminating your mother trees through the in vitro shoot tip grafting, and you do the lab to land transfer. Then after that I'll give for testing, virus and bacteria testing. They'll give me, yes, 90% of your plants, then 10 plants which are infected, I will discard them. Those then I'll maintain as a registered healthy source of citrus repository, which will become the foundation for my large scale multiplication. Then coming to the actual commercial production of the disease-free planting method through shoot tip grafting. Okay. And here the object is to clean the selections we have already got. Based on the field survey, 2 to 3 years we will test in order to bring them to candidate plus tests of the, whether it is an Ackermann, sweet orange. Those elite selections I already have. I have cleaned them through the in vitro shoot tip grafting. So which have, and then I have established field foundation blocks and protected foundation block. Then I will be supplying, I will produce through in vitro shoot tip grafting, supply those quality citrus plants for establishing the productive citrus orchards in farmers' fields. So here, what is the methodology? So candidate plus trees we have already selected. We maintained them as a protected foundation block. In the screen house also, in the field also, from there I'll take the budwood. We consider them as registered mother trees after indexing. Take the budwood, go for the large scale multiplication. And here the brief description where selection we will be doing, indexing I'll do it, and recovery of pathogen through in vitro shoot tip grafting. Then again we'll do the indexing. Then I'll go by putting those, taking the budwood and in the multiplication screen houses will be doing under the protection, and the plants will go to the farmers. So here what is the practical utility? Here the elite healthy planting method for establishing the new orchards, and through this there will be gradual elimination of the infection source, which helps in controlling the diseases and increasing the productivity. See, what is the, you can say, what is the conventional budwood? What is the advantage of this technology? Whatever conventional budwood certification, which is decades old, it will not address the quality and certification parameters, but shoot tip grafting, it will produce the disease-free planting material, which ultimately it increases both the productivity and profitability of the orchards. Okay, and the specification of this technology, like comprehensive entire this citrus improvement program, it is to clean, produce, maintain, and testing and distribution of the planting stock to the citrus growers, nurseryman. So it is, and with a highly specialized state of infrastructure and equipment and technology. And the production cost is like, when we have calculated, it is coming to 116 rupees per plant. When you take from STG mother plants from, it is when it goes to the farmers. What facilities you require? You should have the tissue culture lab, insect proof screen houses 4 to 5. And you should have your own selected cyan mother tree source and rootstock blocks. And whether the same technology or products are already manufactured in India, whatever technical know-how we developed at CCRI, that has already been taken by the like universities and other departments also to follow. Okay, those are the standards we have laid for the universities and also the state horticulture departments or any department. They are taking their follow, and this is technology has already been taken and being followed in all major citrus growing regions of India. And again, the pilot plant, of course, we are already doing on a pilot scale, commercialized. So far, we have produced and released 4.5 lakhs of this shoot tip grafting derived planting material, and we generated a revenue of around 2 crores to this institute by sale of the
STG derived planting stock, and still there is a demand. In 2004, our plants started, maybe 2002 on a small scale, some 100, 200s, 2004, 5,000, 15,000. Since 2004, we started supplying to the farmers, and there is now also there is a pressing demand for the quality planting material produced through in vitro shoot tip grafting. An impact of this technology in the production of the healthy productive orchards, and technology has got a great promise in bridging the gap between average and potential productivity. It is applicable to all the major citrus producing regions. Of course, it is patentable, but by that time we were not thorough with the patent technology and all. We already made the publications. And till here it is the same, like making the in vitro shoot tip grafts and taking them to the screen house. See, this is the mother tree, that source, registered mother tree of the STG derived planting stock, which I am using a foundation source for largest multiplication. Okay, see now from here, commercial multiplication, how we are doing. We have the technology, we have the base nucleus stock through the in vitro shoot grafting, and I am raising the root stocks under sterile conditions, like in a protected greenhouse, again in a poly bags with sterilized soil, sand, and FAM. Okay, this is the root stock. Then this budwood source will be the whatever from registered mother tree source, which I am maintaining under the screen house. And see, here it is a STG derived disease plant, and 5 months, just 5 months after budding, how they are healthy, they are looking. Already budded, sir, and 5 months they have got this much growth and uniformity in quality, you can see. And this is the entire process how we do the through shoot tip grafting, selection, shoot tip grafting, indexing, then multiplication. This is how during the monsoon season, and we are through the paper advertisement, we give these many plants available with us, and per 100 per plants per head we are distributing. People will give, whosoever sent through the registered speed post only are entertained. So the plants, the persons first come first serve basis we are distributing. Oh, this is the demand for shoot tip grafted derived planting stock. Earlier, when we started 2004-5, there was a lot of, you can see a stampede at our center. We used to call a police source to control that stampede, because that time this paper system is not there. Paper advertisements, first come first service. People right from the midnight, these trucks used to stand at our entrance of our gate. Okay, they used to stand in a lines. So in order to control that, and there was a question in the parliament, every one should get right from Aam Aadmi and to all the equally distributed to the any without any reservation for any other things. So then to maintain the transparency, we are maintaining calling the applications through the advertisement. So the transparency is being maintained. This is the very first year. Okay, now we have got the technology, we have taken the plants, and they have gone even to the farmers. In the farmers field, how they are performing. There was a project, DBT project I have run. They have given first 3 years, then they extended after seeing the performance to a total 6 years I have run to see what is the field evaluation of these tissue culture plants in comparison to the conventional bud grafts, which are produced by the normal traditional way of transplanting method. So we have compared. This is, you can see the potential of this planting stock. This is the STG derived, and this is a 6 months old, and this is a 1 year old, and this is a normal plant, normal budded plant and Bandhara. And this performance of STG plant 1 year old, such a vast difference. This fellow, this farmer also, of course, he has tried for taking, because such a larger demand is there, and we cannot meet. It is a demand is around, right now it is a 2 crores of planting material demand is there. We are unable to make even, maybe our capacity is 1% of that. So why this is the very aim of calling this entrepreneur, this EDP program. This time when 10 people join together, we have already signed MOUs, around 7-8 MOUs, production of the planting material for a large scale multiplication, in order to for manifold increase of availability of the planting stock to the farmers. It means
you are trying an effort, the quality planting material will go to many and many people. The productivity will be increased. Again, the GDP through this agriculture GDP. So ultimately, we are helping the entire government and also farming community. So these are at different stages, and here see up to even to 13-14 years old also performing better now at this stage. It is at Chhindwara, the STG derived planting stock, this performance 6 years, 7 years old fruits. And this is the latest last year performance, you can say demonstration we did in, it is a Katoloni in Nagpur district. You can see a 13 years old plant, how much it is laden with the fruits. And their tonnage is in more than, of course, sometimes they don't disclose. The average productivity now maybe it is like earlier when we were 9 to 10 tons, and now it is some farmers who are following this technology, 20 to even 50 tons. I am not declaring, sir, in Wardha, one farmer, you can even Rahul Agarwal. He has taken plants from rice since 2004. Now he is harvesting. Last year he harvested, not this year, some 40 tons. He told 50 tons, but I am not declaring. 40 tons they have harvested. Per hectare. Per hectare, sir. So per hectare average productivity now also it might have reached 12 tons. But earlier it was around 8-9 tons. After following this technology, they are getting an average productive, average I told 20 tons per hectare. So for my entire technology, it has like we have got an award also for the production of the disease-free planting material through in vitro shooting grafting and microbirding. We got a national award, ICR award, for outstanding, Dr. Punjab Rao Deshmukh Outstanding Woman Scientist Award was given for this technology, and our CCR has got. And another technology which has gone from our lab, that is tissue culture lab, it is a microbirding technique. What is the beauty of this technology? Actually, in a traditional propagation technique, right from seed sowing, it reaches to the farmers, it takes 22 months time. Okay. Because you need 6 to 8 months of primary nursery stage. You need another 6 months as a secondary nursery. Then after budding, it will take another 6 months. So total, if you count 20 to 20 months. Here we have reduced and restricted the entire nursery stage to just 10 to 12 months. Okay. And here, like we take in traditional, the main objective is to shorten the propagation period. And it is nothing but a miniature budding where the on a younger root stalks measuring around 3 mm diameter. We take a 5 months old rootstock, we'll decapitate and a wedge-shaped cut, we take minute buds matching to that rootstock we are putting and covering again with the instead of a plastic tape used to cover in the traditional budding. Here we are putting it with the micropipette. We will give the protection. Here now the methodology, like seeds of rough lemon rangpur lime we are raising. In the traditional way we used to do earlier, 2 months old rootstock we are transferring to the poly bag. And in the poly bag, once when they are like we maintain a luxurious vegetative growth till they get a 5 months old rootstock. On 5 months old stock, like in a wedge-shaped cut, we'll decapitate the rootstock, we'll give the wedge cut. There, our budwood source also here, STG derived mother plants only we are using. From the tender cyan flesh of the STG mother plants, a minute bud is removed and we are putting inside the wedge cut on a 5 months old rootstock. And here it enables the advantages. First is reduction in the propagation time and reduction in the time, space and money also. Huge cost saving in maintenance of the planting material. There is a really, when you imagine a 22 months old, you have to take care of the planting material and you have reduced to almost a half. A lot of saving in a plant protection, it's fertilizer, it's irrigation, so in the labor cost. So shortens the propagation period by at least 8 to 12 months. And budding can be done on 5 months old rootstock. And specifications, this is a novel propagation technique to cut short the citrus nursery phase. And here the cost calculations when we did, it is
Yes, normal budded plants to STG, when we have calculated, it is coming on 115 to 116 rupees. And here it is 69.5 only micro budded plant. And right now we are selling. Actually, we should not sell it. Without no profit, no, you can say, no loss basis, we are selling. When we calculated our cost is coming more. Without any profit, we are selling to the farmers. 100 rupees. Always there should be a margin of STG derived plant compared to the normal budded plants. But I don't know what is the reason we have made it common. 100 rupees for both the plants. And by this way, we are losing some revenue to the institute also. And here raw material, like I told, you need some greenhouse facility. You should have your own cyan mother blocks. And you should have your rootstock blocks and some micro pipette tips and razor blades, some minute paraphernalia you require. And a similar technology, of course, we are the first in India. This research is first of its kind and landmark in the propagation of the like fruit tree industry, first reported by CCRI. And we have got a commercial facility also, pilot scale facility. We can produce 40,000 plants provided your technical manpower is well trained. And here impact is there is a tremendous scope for commercial propagation, year-round multiplication, and also for disease indexing also it is useful. It is almost useful for all the citrus growing regions. And patenting, of course, we have not done. And this is actually how we do. I'm showing. And this is rootstock, 5 months old rootstock you are taking and you decapitate here. Okay, and this is grown in a sterilized soil. Then once after putting the minute bud, and we are protecting it with a micro pipette tip. And this is, you can say, a micro versus conventional bud. It takes around 3 weeks to 1 month for coming the successful graft. But whereas here within this is 1 month old, what is the fastness you see? 2 months may the growth in the micro budding. And this is a large scale multiplication we did in micro budding. And successful micro budded plants just 2 months after budding, and you can see the uniformity. And 3 months they have already grown up to 90 centimeters height. 6 months after budding, these are all micro budded plants. And cost calculations we did. Here it is coming 67 rupees cost for one each micro budded graft. Okay. Next technology. Yeah, abhi tak 3 hai. Last technology I'm coming, 4th one. That is another innovation. Actually, I'm bypassing that even exotic germplasm. Once they know whether it is a Nagpurman and sweet orange, it is available for the rest of the cultivars. So I bypassed. I am not showing that. This is another innovation we made in the nursery technology. Like I was telling, no, 22 months it will take from seed to till it reaches to the farmers. Through micro budding, like we are reducing also shortening the phase. This is without micro budding. It is a direct seeding method. Normally, direct, you can say this is a retrofitting of citrus nursery phase to optimize the production cost of the planting material. It is mainly facilitates, our objective is to raise the vigorous rootstocks in shortest possible time, and also to bring some modification in the nursery system in order to bring the significant changes in a propagation period also, and also in the cost of the production of the planting stock. Okay. And what like here the difference is in container nursery, first the rootstock seeds, they are raised first in the primary nursery, secondary nursery before budding. Okay. In case of this roots, in retrofitting, what we have done, we have completely bypassed the primary nursery phase. They are directly sown in the poly bags to reduce the nursery phase and also to reduce the cost of the propagation. We have directly raised in the poly bags. So the first primary phase, which we used to raise in a plastic trays, they'll remain in 6 to 8 months. That is completely we are avoiding. We are then simultaneously we are reducing the entire propagation period just to 12 months. I'll come to the this is the
cost benefit ratio, and 77 rupees it comes when you follow this technology direct sowing method per plant through the on a 6 months old rootstock. When you do the direct sowing, and its cost is coming 77.5. Direct sowing micro budding, when you follow coupled with micro budding, it will reduce further the cost to 62 rupees, and 160 rupees is a traditional transplanting way that in our system, I am telling you. In our system, in SDG method, these are the cost calculations. So this should be the all your raw material. What should have your own cyan blocks, registered mother trees. You should have your own rootstock blocks, and you should have the greenhouses. And this is the solar house. Like it is throughout the year, I can do the solarization of the soil. So impact of this technology, mainly it reduces the propagation period. It reduces the poor production cost. And even the root coiling problem is a little bit reduced here compared to your traditional transplanting method, which improves the later field performance in the main field. So these are the how we are extracting the seeds. There should be some complete package of practices you should learn as an entrepreneur to follow this technology to restrict the phase from 22 months to 12 months. Seed extraction we are doing there by end of the July. So we have standardized this technology in all the rootstocks. And here, this is on rough lemon. This is 3 months old, and Rangpur lemon 3 months old, which you don't get when you follow the traditional transplanting method. So all the 3 rootstocks. This is a 4 months old rough lemon, and large scale multiplication micro budding on the rough lemon. You can see how uniform it is on Rangpur lemon, and again an Alimo. And you can direct sow grafts, one conventional bud grafts. These are the conventional budding, which has taken 14 months stage, and you can see just a 5 month stage, the total, how they have grown. And this is 5 months old only. Micro budded Nagpur Mandarin and 5 months old rough lemon rootstock before release. 11 months may the plants are ready for release to the farmers. And this is on Rangpur line. 6 months old rootstock, 12 months may this direct sowing method and normal budding. There it takes 10 to 11 months. Here it takes 12 months. And on different rootstocks also we have proven this is applicable. Here transplanting rootstock, which for making them ready for release, 17 months old before, this is budding only. This is before budding, 17 months old rootstock. And this is 5 months old rootstock before budding, direct sowing method. Conventional budding on direct sown rough lemon Rangpur line. So direct sowing method में rough lemon Rangpur line, these are all budded plants which are ready within 12 months. So all the rootstocks we have standardized in acid lime also. They are getting ready. And a taproot system, it is better here, and here a trimmed taproot in transplanting method. This is before seed. When you follow this transplanting method, it will take 20 months old, it will take. So when you follow the direct sowing micro budding, the entire process is restricted to just 11 months old. So these are the this thing. Direct sowing here, whatever 8 inches it will go the taproot system. But in transplanting method, you can see this knotting problem comes. So there is a reduction in the root coiling problem by following this method of direct sowing. These are the economics part, which I've already told how much it comes by following different techniques. So almost half we have reduced the production cost compared to the transplanting method. So if you have any questions, you can ask. Yeah, we can. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. 1 minute, madam. If somebody want to establish this unit, right from the land, how much land is required, laboratory cost, raising mother plant. It will take, when you raise the mother plant, for 3 years. Yes, minimum till it goes, it should attain its adult stage. It should get flowers and fruits. Then you ensure, yes, I can go for further multiplication. Don't take a juvenile plant of 1 year old for large scale multiplication, provided your shoot tip is from an adult tree source. Then you
That way you can do from 1 year. What is difference between its two rootstock which you are taking as a material? Okay. Is there any difference in production level? Other plants? Yes, but compared to the conventional budding methods, sir, conventional grafts, non-tissue culture source, tissue culture source, irrespective of the rootstock, there will always be an advantage. You take an alimo, you take rough lemon or ragpul. There is always an advantage, and I am telling, people are harvesting up to 30, 40, even tons also per hectare compared to your average productivity. What is the cost of the project? If somebody wants to take through processing, there is banks facilities available. So 5 or 6 entrepreneurs join. How much project will cost to establish such unit? Sir, that we have already calculated, but they will not be the people. Now we have made some standard guidelines. The person who comes, first he has to fill up an application. What facility he is having, how many greenhouses, whether he has got the science blocks, whether he has got the seed blocks, how many trained manpower. And there will be a committee will go physically to verify whether that particular person is competent. We satisfy ourselves. Then only we assign. We will recommend, yes, this person is able to do, and we will go further. Some young people, that is farmers producer company, Mhm. NABARD is allowing banks. Such unit can be established because you say there is demand of 2 crores. Yes. Material is not available more than 3 lakhs here. They can establish that. Actually, you should go for the alternate sources where you can use the tag arrangement of the technology, and private entrepreneurs can take up this project back with finance all that. Right, sir, right. Isilye, why we are now progressing? Already we signed some 7. CCRA has 7 to 8 consultancies. We have already signed to private agencies, tissue culture, big tissue culture companies like Maharashtra Hybrid Seed Company. They are doing, sir. There is one farmer sitting among you. I think Mr. Prashant. He is, sir, just, of course, we have not transferred through MOU. One of our training programs he has attended. He has learned that microbudding. He started doing 1 lakh. Last year, some 35-40,000. Even sometimes a trained manpower having the greenhouse facility, they may not be doing. A simple farmer, you can look at him. Very humble farmer with the humble resources and all. He started in last 2 years. He has already released different varieties of sweet oranges through microbudding. And he is selling at a rate of some 80-90 rupees. You are selling 90 rupees, and such a great demand. He got the bookings well in advance. There are the people, and Shivam Nursery we have signed, they are doing a large scale multiplication. And Green Valley, they are already doing. So in order to take as a precautionary measure, right from now onwards, whosoever we are training, arbitrary we are not training, we will do. Whether all these facilities they have, then only we will go for sign. Then we will. भारत सरकार इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए प्रमोट कर रहा है। That you write a letter if what rules as per the ICAR guidelines are there. Whether it comes under consultancy, contract, training, there are different charges. So as per the rules, ICAR guidelines, we will follow. No, this is my 20 years of my core research work which we developed into technologies. It has taken with a single day, you will not be able. This is a theoretical part. We are just creating awareness to the entrepreneurs, how many technologies we have got. Where is the scope for profit making? There should be a market. Here right now there is a market for the planting stock. If you are able to produce, he has produced at 35-40,000, that's how they are sold like a hot cakes, I'm telling you. So there is a market driven technologies where you can commercially do it, and you can do it further also for next even 5-6 years, even throughout, provided you should have this facility. And for a research purpose, as a student, I want to learn that we have to see the guidelines, how many
we can like hand holding we can't do. Hands-on experience. Hands-on experience is through consultancy MOU signing. Entrepreneurship is again you have to, as per the ICR guidelines, we have to follow. Entrepreneurship, why we are doing, you will be signing an MOU with the CCRA. There will be charges which is as per the rule only will be charging. So far, some 6-7 consultancies, these are on cost basis. Maharashtra Hybrid Seed Company, you think that we will give at a, that they want to learn because they know the scope of this technology. And they'll come, you please teach us. No, there is a cost base. You write to your data, to our director. Hands-on training के लिए अगर हम कोई बात बताते हैं कि 70% सरकार हमें देगी पैसा, 30% हम अपना डालेंगे, तो ऐसा यूनिट अगर हम खड़ा करना चाहते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी हमें कहाँ से होगी? Yeah, you can very well, because you are equipped and government is helping you. You want to, this is your part. But for taking the technology, you have to write to the director as per the ICR guidelines. We will be advising you. Okay. Thank you very much. Thank you, madam. One thing I want to tell you that in this program, my request is that you learn and try to understand that which technology you want. This program is not to give you on-hand training. Don't expect that on-hand training will be given. This is a program which is for the awareness of the people that these are the technologies we have developed. Among them, if a person is interested with that technology, they have to write a mail to the director that in your program, I had seen this technology and I am interested to take this technology. One thing I assure you from this platform, that nothing is free, mind it. Now in the government organization, we are bound to take the money to give the consultancy. So training part is different than entrepreneurship development. Got clear? ट्रेनिंग लेना है वो 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, 15 डेज होती है, 21 डेज होती है. जो टेक्नोलॉजी मैडम ने 30 इयर्स के में डेवलप किया है, यू कैन नॉट लर्न इन अ डे. सो मैडम गिव्स द टेक्नोलॉजी टू द एंटरप्रेन्योर्स. एक एंटरप्रेन्योर का डिफिनेशन ही यही है ना. हम एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि हर चीज फ्री 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 मिल जाए, ऐसा नहीं होता है. एंटरप्रेन्योरशिप मींस यू टेक ए रिस्क, टेक द टेक्नोलॉजी, and there is a sound system already established in ICR. आपको जब ये टेक्नोलॉजी दिया जाएगा तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा. Once you are involved with signing MOU on a 500 rupees stamp paper, there is no need to request. You are having the rights to learn. So first you prepare mentally that where you feel fit to for which technology. Got the point? एक दिन में टेक्नोलॉजी को आप नहीं सीख पाएंगे. अभी तो कई सारे टेक्नोलॉजीज को आपको देखना है. आपका जो इंटरेस्ट है उस टेक्नोलॉजी के लिए आप इन पर्सन यू राइट अ मेल दैट आई हैड सीन दिस टेक्नोलॉजी, आई एम इंटरेस्टेड टू हैव दिस टेक्नोलॉजी, हाउ टू गेट दिस टेक्नोलॉजी. अभी हम आपको एक शो केसिंग ऑफ द टेक्नोलॉजीज है हमारे कैफेटेरिया. वी आर शोइंग यू ऑल आर हैविंग डिफरेंट potentials. Everybody is not interested in one technology. They will write that I am interested. Now the further process will go by signing MOU, giving a training, visiting to you. Scientists will visit you. It is not like that we give and forget. We go visit. It's 1 year or 2 years. It's like that. Then you have a detailed project reports. Got the friend? Any more question? हाँ पूछो. small scale of unit डालने के लिए tentative cost कितना आता है? Maybe 10 lakh, 50 lakhs, 1 crore capital investment except for the land. Land छोड़ दीजिए. Capital cost उसमें normally कितना आ सकता है अगर usually madam minimum you should have at least 3 to 4 greenhouses if you want to do systematically to produce a then indexing you are supposed to do if you want to back in a license in nursery. People they repose the confidence on you. Once you start having your own brand, people may forget even our STG brand.
Right now, last 10-15 years, our STG brand is good. Okay. They always You want to brand speak? value sells more. Sir, let you speak. What I'm telling, around one, you can four scheme houses, 40 to 50 lakhs. शेयर हाउस के लिए minimum. 800 to 1100 1,100 rupees का कॉस्ट per square feet नॉर्मली तो मिनिमम पर स्क्वायर फीट का बनाना पड़ता 10 गुंठे 10 हां इसका डिटेल्स में आपका होगा मेरा कहना है एक बात है जो भी है एक्सपर्टाइज प्रेजेंट कर रहे हैं क्या सब लोग बैठे हैं कम से कम 50 लोग हैं 100 मिनट अगर वेस्ट जाता है तो एट अ टाइम 100 मिनट वेस्ट जा रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए उसका मार्केटिंग स्कोप क्या है नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल वो भी डाटा इसमें अटैच हो जाए प्रेजेंटेशन में तभी मजा आएगा अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरप्रिटेशन डेवलप मैडम ने बहुत सही प्रेजेंटेशन किया प्रेजेंटेशन भी किया इसमें गैप है कि ये नर्सरी प्लांटेशन गुड मटेरियल का इंडिया में क्या स्कोप इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्कोप इसका थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए देखिए ऐसा है, मैं आपको चीज बताऊं, सैम्पलिंग गुड सैम्पलिंग का भी बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, अब्रॉड में भी है, अदर स्टेट में भी है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप अगर करना चाहते हैं तो वी कैन गिव द मैसेज टू दिस ऑडियंस, यस वी गो फॉर सैम्पलिंग प्रोडक्शन विद दिस टेक्नोलॉजी। आई एम गुड वेरी गुड प्रिपेयर। देखो एक साइंटिस्ट का प्रिपरेशन जो है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं सर। A scientist do the work, he develops a technology. It is the entrepreneur who has to come forward with a brain having that bubbling ideas that how I can utilize it. Because I'm telling only one small example. When the formula of E equal to mc square was given, we understand no? EMC square, how the energy converts to mass. Now it depends that how you are going to explore it. It has been explored in a different ways. So everything if you expect that everything if you make and present, we will become the entrepreneur after retirement. Okay, sir. I will listen you. I know you are having a lot many ideas. You had asked for 15 minutes presentation. I think so. I will listen you. Try to understand that somebody is presenting. He has taken his all efforts. If you suggest something good, in the coming presentation, the modifications can be done. But at random, if you want everything is to be present, that global data, India data, we are writing research papers, you will find all data we are giving. We are here to impart the knowledge what we had gained in our experience. I think you will cooperate in that. Okay, friends, now it's the time for lunch. I know that after lunch, and I will request the speakers also to minimize the time so that our bank people can speak something about that. Some interested entrepreneurs want to say it's that. आप सभी को मैं लंच के लिए इनवाइट करता हूँ। आप नीचे उतरेंगे, राइट साइड में कार पार्किंग के पास ही लंच का अरेंजमेंट किया गया है। प्लीज कंप्लीट योर लंच एंड यू विल कम बैक आफ्टर 1 hour. Thank you.